Good evening, everyone. So today we are starting new chapter of grade 9, that is motion. So in physics, motion means when something is moving with respect to time. Okay. In everyday life, we see the objects at rest also and in motion also. Okay. So rest and motion are actually, we can say, relative terms. Plus, we can also say that they are opposite to each other. Okay. In our day-to-day life, we see that blood is also flowing, veins are moving, our eyes are moving. Okay, we are also in locomotion, things are moving. So motion is everywhere. Okay, without motion, we cannot imagine our life. Okay, so we often perceive an object to be in motion when its position changes with respect to time. We can also consider it as a definition of motion also. If this is asked in exam, you can write this thing. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences also. Okay, indirect, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट ऑब्जर्व मोशन ऑफ अर्थ डायरेक्टली, हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हम डायरेक्टली अर्थ का मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट वी कैन सी द डे एंड नाइट, वी कैन सी द सीजन चेंज, सो वी कैन see that earth is moving. Okay, we can also see the moving branches, but who is moving the branches? Air is invisible. Okay, so there are indirect ways also to evidence the movement of any object. An object may appear to be moving for one person and stationary for the other for the same time. For example, एक ट्रेन है, ट्रेन में दो पर्सन है, X and Y, and there is a person A outside. Okay, so two cases are there. If you are referral point, you are observing this person Y. Okay, so he or she will be at rest क्योंकि वो तुम्हारे सामने ही बैठा है, स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उनके लिए आप दोनों मोशन में हैं बिकॉज बोथ ऑफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन. For example, whenever you're moving in a bus also, you will see the motion of the trees in the backward direction. Okay, although trees are stationary, you are moving. Okay, similarly, okay, stars sometimes seems moving to us, but stars are not moving, earth is moving. Okay, so same thing they have also written here. However, the passenger inside the bus see this fellow passenger to be at rest. Where do these observation indicate? So motion is a complex term, बेटा. Motion कोई simple term नहीं है, ठीक है, बहुत ही complex term है. Sometimes some objects show only one type of motion, some objects show two type of motion at the same time, and multiple also. ठीक है, so some objects may have straight line motion. If anything is moving in a straight line, is known as rectilinear motion. For example, motion of light. Okay, light travels in a rectilinear way. Okay, then some may rotate. Okay, rotation. Okay, a few others may vibrate like pendulum. They may be situations involved in combination of these. लेकिन ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन हो, ऑल टू थ्री टाइप ऑफ मोशन विल बी शोड एट द सेम टाइम. ठीक है, if you see car is moving in a rectilinear position, ठीक है, but there are curves also on the road, so there will be circular motion also sometimes if round surface is there. Okay, or the wheels of the car at the same time. Okay, then in this chapter we shall first learn to describe the motion. Okay, objects along a straight line. We should also learn to express such motions with simple equations and graphs. ठीक है, हम सीखेंगे मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में भी और मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं. ठीक है, so when it comes to describe motion, beta, we have to take a reference point. Without reference point we cannot describe the motion. ठीक है, for example, if I say go to school, it is in north, but from where? There is no referral point. ठीक है, कहाँ से स्कूल नॉर्थ पोजीशन में है, ठीक है, बट इफ आई स्पेसिफाई इट, ओके, दैट स्कूल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो तुम्हें अब पता है कि रेलवे स्टेशन से स्कूल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो व्हाट इज द रेफरल पॉइंट ओवर हियर? रेलवे स्टेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डिफाइन करें कार की मोशन को, कार इज एट रेस्ट, बट विद whom, with which referral point? With respect to road, car is at rest. With respect to that tree, car is in motion. ठीक है, so we have to give referral point. ठीक है, moving along a straight line.
The simplest type of motion is the motion along a straight line. ठीक है, straight line का motion is the most simple form of motion. ठीक है, अब तो मैं example दिया है बेटा, एक object है जो अपनी journey start कर रहा है. Okay, I'll tell you the cream of that product. ठीक है, you need not to read the entire paragraph. Basically here they are explaining you the difference between distance and displacement. ठीक है, now if an object is there who is traveling from O to A and then point A to point C again, okay, so you have to tell the total distance traveled by the object. Obviously from O to A distance is 60. Okay, from A to C, what is the final point? 60. Okay, 25 initial and final. ठीक है, so it will be 35, right? 35. ठीक है, then again distance traveled by object is 60 plus 35 is equal to 95 kilometer. ठीक है, but when we will talk about displacement, displacement does not depend upon the direction of the motion. Okay, it does not depend upon the direction of the motion. They take the minimum and the shortest distance between initial and final point. Initial point is O, final point is C. So it is 25 kilometer only. Okay, so distance, beta, distance has magnitude. It has nothing to do with direction, so we will take its a numerical value only. ठीक है, distance में जो है वो उसका हम magnitude consider करते हैं, उसमें numerical value होती है, वो depend नहीं करता है direction के ऊपर. Sorry. ठीक है, इसीलिए irrespective of the direction हमने क्या किया, जितना actual distance उसने travel किया उसको sum किया, that is the distance traveled by the object. ठीक है, अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट O से A पे गया और A से वापस O पे आया तो 60 प्लस 60 विल बी 120 किलोमीटर. बट अगर हम सेकंड केस को कंसिडर करें, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ने जहां से शुरू किया चलना वहीं पे वापस आ गया, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, so displacement in this case will be 0. Displacement in this case will be 0. Just a minute. Okay. The total path of length covered by an object from O to AC, 60 plus 35, 95 kilometer, that I have explained you just now. Okay, so it is a physical quantity which has magnitude. Okay, the shortest distance measured from initial to final position of an object is known as displacement. This is important, beta, note it down. Okay, so again, so here they have told you from during the motion from O to A and back to B, 65 kilometer plus 25 kilometer is equal to 85 kilometer. Okay, and then O to A to O 60 kilometer, and then A to O again 60 kilometer, 120 kilometer. But if you talk about displacement, that will be 0. Okay, next is uniform motion and non-uniform motion. So consider object who is moving 50 meter in first second and 5 meter. I'm saying 50. It's 5 meter. Okay, 5 meter in first second, and then 5 meter more in next second, and 5 meter in the third second, 5 meter in the fourth second. Okay, so in each second it is covering 5 meter. So this type of motion, when an object covers equal amount of distance in equal interval of time, is known as the uniform motion. Okay, on the other hand, non-uniform motion is opposite होगा.
ठीक है, उसका जरूरी नहीं है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करे, ठीक है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर तुम एग्जांपल लो किसी भी चीज के मोशन का, चाहे वो साइकिल है, बाइसाइकिल है, कार है, मोटर है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रैफिक इज देयर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी की भी ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो ये है जो चल रहा है in at 9:30 a.m. then 9:45 20 मीटर ट्रेवल किया, 10 a.m. पे वो 30 मीटर, so basically here 10 मीटर he is traveling, okay, the object is traveling in each 15 minutes, ठीक है। so we can call the motion of an object A is in uniform motion, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन बेटा हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन मत समझ लेना, ठीक है, ओके। This means that object is at rest, object move ही नहीं कर रहा है, ठीक है। and if motion is like this, that is non uniform motion, ठीक है। so object B is at non uniform motion क्योंकि initial 15 मिनट में 12 मीटर चला, then 19 23 35 37, it's varying, it's not uniform, ठीक है। next is measuring the rate of motion, rate word wherever it comes that means it is associated with respect to time, ठीक है। Different objects may take a different amount of time to cover the given distance. Some of them move fast, some of them slowly. The rate at which the object moves can be different. Also, the different objects can move at the same rate. Okay. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance covered by the object in a unit time. Okay. This quantity is referred to as the speed. जब भी हम मोशन को फाइंड आउट करते हैं कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। सो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, बट ऐसा यूनिट यही है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही तरह की स्पीड में ट्रैवल करे पर आवर, ठीक है, तो हम उसमें क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है 5 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, इन नेक्स्ट आवर, ठीक है, शी इज ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, दैट इज द average speed, that is 20 divided by 2, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 15 प्लस 5 किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज वी आर टेकिंग आउट एवरेज, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। v इज इक्वल टू s अपॉन t, ओके, स्पीड, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट is a numerical, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of an object? So again 16 meter is the distance traveled, we can add it up, 32 meter, initial time taken is 4 seconds, next time taken is 2 seconds, add up कर दिया 6 meter, ठीक है। So how to take out average? We have to just divide it, ठीक है, total distance traveled, total time taken, कट किया, solve किया, 5.33 meter per second, ठीक है, is the average speed. Next is speed with direction. Speed with direction, that means it is a vector quantity, ठीक है। The quantity that specifies both aspect is called velocity. Both aspect मतलब स्पीड भी डायरेक्शन भी, अगर कोई क्वांटिटी बताए that is known as velocity. So sometimes they can ask you what is difference between speed and velocity. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉट डाउन करना नोटबुक में, कल मैं चेक करूंगी, ओके। Next is velocity is a speed of an object moving with a moving in a definite direction. Velocity of an object can be uniform and can be variable. Velocity सेम भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर तुम स्पीड को चेंज करते हो ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन को चेंज करते हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी,
ठीक है. So when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. So average velocity हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, initial velocity plus final velocity divided by 2. ठीक है, initial velocity is represented by u, final by v divided by 2. Speed and velocity has the same as a unit beta meter per second. ठीक है, भूलना नहीं है. ठीक है, next is these type of न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और जो इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको हम सेपरेट सीरीज में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल साइंस हैमर. द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 kilometer and start of trip and 2400 kilometer at the end of the trip. ठीक है, so if the trip took 8 hours, calculate the average speed. ठीक है, so final reading क्या थी odometer की? 2400, initial 2000 minus किया 400 kilometer. ठीक है, so we have the average distance also, time also, divide किया 50 kilometer per hour. ठीक है, अब हमें किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 1000 मीटर को 3600 सेकंड से डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसकी तुम वैल्यू याद रखना बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू ले लो 5/18. और अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम लेंथी होता है. ठीक है, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 13.9 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट इज उषा. Usha swims in 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same path. Find out the average speed. ठीक है, अब यहाँ पे पर मिनट है बेटा. ठीक है, so in 1 minute how many seconds are there? 60. So 180 meter multiply by 1 minute by 60 सेकेंड. ठीक है, एंड देन आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से उसने शुरू किया वहीं वापस आ गई, इसलिए 0 डिवाइड बाय 60 सेकेंड, अल्टीमेटली क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, याद रखना है डिस्प्लेसमेंट में 0 आएगा, तब जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गई. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, एज रेट वर्ड इज देयर 100 बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ. जहां पे भी रेट वर्ड आए इन रिलेशन विद टाइम, पर टाइम कितना हो रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. In this case, the change in velocity of an object for any time interval is 0. However, in non-uniform motion, the velocity varies with time. It has different values at different instant and different points of path. This change of velocity, rate of change of velocity is known as the acceleration. ये देखो, ठीक है, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, सो अगेन फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, देन टाइम टेकन, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, okay, if object travel in a straight line, its velocity increases or decreases by equal amount at equal interval of time. तो ये कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. बेटा तुमसे पूछा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो याद रखना है जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और अगर यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, now there is a numerical. Starting from a stationary position, Rahul pedals a bicycle. तो मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है? 0. स्टेशनरी था पहले बाइसाइकिल. Attain a velocity of 16 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle come down to 4 second inwards in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Initial velocity क्या है? 0. फाइनल क्या है? 6 मीटर. ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या है? फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, आ गया. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इनिशियल वेलोसिटी. सेकंड केस में कितना था? 6 मीटर. फाइनल में 4 मीटर. माइनस किया, कैलकुलेट किया, एंड देन यू गॉट द आंसर. ठीक है, तो डेसिमल में कैलकुलेशन आना चाहिए. कभी
नाइन्थ के बच्चों को डेसिमल कैलकुलेशन आता नहीं है, सो डू प्रैक्टिस. सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स. ओके, डू प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो. घर पे एक बार फिर से रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी विल स्टडी टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.